Change is the end result of all true learning. A euphoric and mesmerizing evening to all of you present here. It's me, Payaswini Sehgal. And me, Pratham Arora. Welcoming you all on behalf of UEC Journalism. We have got a great privilege to host this debate on the prevailing topic, that is online classes. ऑनलाइन क्लासेस आज के डिबेट का टॉपिक है। ऑनलाइन क्लासेस तो जैसा कि हम जानते हैं पिछले 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस में पास होते आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सही लगता है ऑनलाइन पढ़ना। तो आज का यही टॉपिक है कि आप लोग आपके पॉइंट्स लाए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस किस वे में अच्छी है और उसके क्या ड्रॉबैक्स है। तो इसी के साथ मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड होगा जिसमें आपको आपके पॉइंट्स बोलने रहेंगे चांस बाय चांस, और सेकेंड राउंड जो है मैंडेटरी है, जो जिसमें आपको एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चन करने हैं। और ये बहुत मतलब ये सभी को करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। और मैं बता देता हूँ ये आज जो रखे हैं वो क्वालिफाइंग राउंड है जिसमें से टॉप 5 सिलेक्ट किए जाएंगे। सो काइंडली सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, आंचल शुक्ला। Good evening, everyone. As we all know that we are here to debate on whether online education is better or offline education is better. So I am in support of offline education, as merely moving classroom online would not mean effective remote learning, one-to-one interaction among peers and teachers, as we know that interaction between teacher and student is the key of learning. Okay. And secondly, there are certain courses where offline education is mandatory. Like you in medical sector, you need offline education. You can't learn to operate somebody online, or a pilot can't learn to fly plane offline. See, if pilot will learn, if by sitting here, if we learn something to plane, then we all know that the lives are in danger. So yeah. Hello, am I audible? Yes, Achal, you're audible. Yeah. And education is supposed to be available to everyone, from KG to 12th. Not all people, students have access to the necessary technology for making condition, for working condition. Working online requires a self-discipline. Self-discipline is the toughest thing. We all have attended online classes, and अब जब ऑफलाइन क्लासेस का समय आ गया, so we all are very much worried कि अब यार एग्जाम कैसे होंगे. See, we more or less we all are worried about it. And social interaction is a major thing in learning. In offline education, we learn self-confidence, our personality grows. And Indian education can't go online. Only 88% of homes have computer with no internet linkage. So I am in 100% support of offline education. So yeah, here I rest my point. Hello. और आगे पीछे घूमने मत, ठीक है? 100% आ गया नोटिफिकेशन। थैंक यू आंचल, you made a great points. To mute. थैंक यू आंचल, आपने बहुत ही सही पॉइंट्स बताए ऑनलाइन क्लासेस के। इसी के साथ हम हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहेंगे, गौतम सोनी। गौतम सोनी अपना Hello, am I audible? yes. Good evening, everyone. I'm Gautam Soni from 4th Sem Mechanical Engineering, and I'm in the against to the motion. मतलब means मेरा कहना ये है कि offline classes are better. As we all know, online classes required screen, and the screen time, more screen time means more panic, more headache, more heaviness in the stress, more stress. और mainly
मैं नहीं कह रहा, ये गूगल का कहना है कि एक एवरेज पर्सन 20 मिनट से ज्यादा एक स्क्रीन पे फोकस नहीं कर सकता। और ऑफलाइन क्लासेस का एक एडवांटेज ये है कि आप आई कांटेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ, जिससे टीचर्स आपके एक्सप्रेशन देख के समझ सकता है आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है डाउट। और दूसरी चीज ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में आप जो है प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, जो कि इंजीनियरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, जो आप एक ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हो। वो चीज आप देख सकते हो पर आप खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो दिस कैन बी अ डिजास्टरस कि एक इंजीनियर अगर आप सोच रहे हो तो वो एक तरह से आपके देश का भविष्य है। तो अगर उसी को आप ढंग से ट्रेन नहीं करोगे तो फिर तो डिफिकल्टी आनी है। सो रेस्ट I just conclude my point that online classes are good in aspects when we don't have any options. But if we can, offline classes may be the one which comes good in a long time view. Thank you. Next, I would like to invite Shashank from first semester electrical branch. Good evening, everyone. Myself Shashank Garia from electrical branch. I am going to speak for the motion of online classes. I support online classes. They are they are convenient. They are flexible. We can record our lectures and we can listen them afterwards also. Because because online classes are, we are more flexible in it. Online classes, we automatically save environment in the online classes because we stay at home and we do not have to go outside, so the resources we use are less. We are also in the attention of our parents. If we have any problems, we can directly ask them. We can not only this, we can clear our doubts online easily, and if we do not understand it from a single teacher, we can have multiple sources to read from. So yeah, online classes are good because they also because we also do not have distractions in online classes, because we do not go and interact with other people outside, and it causes less distraction to us. Thank you. Next, I would like to call Rishabh Nahar, fourth semester CSE branch. A very well good evening to everyone. I am Rishabh Na from first year computer science branch. I would like to quote some topics, some points in the favor of online education. This online education has been proved boon to us in this pandemic time. We don't have to travel in the pandemic situation to reach our destinations. We have ease at our home to take the online education from different part of the place where we go to take education. Secondly, it saves much of the time of person. He can contribute his valuable time in some other place. Thirdly, I would like to say that he can get the best part of education from all over the world. We can see online tutorials, online videos are available all over the world. We can take it from the USA, Australia, India, everywhere at the ease of home. Fourth point, we can take our education on the safety point of view, and it is not meant that only offline education is good. If one has a sheer determination, true concept, then he can take online education very well than offline education. Fourth point, as we all know, necessity is the mother of invention. So when this pandemic situation came, we are empty-handed. We don't have any resource to have the education sitting at home. So online education came as a boon to us. अगर इसको वरदान बोलो तो वरदान, इसको गलत बोलो तो गलत. ये इंसान का पर्सपेक्टिव होता है. It's the perspective of human that he see the bottle emptied or he see the bottle half filled. And last and the most important point, online education has not only led us to the in the virtual world, but it has given us the wider area for the technological world in which we have to live and the current world will come in. And the most important point, that
online education is not only the matter that we have notes, we have this thing, it is like that, it is also like that, but the most important thing is that the person can understand alone very easily without any distraction, which is very common in the offline classes. So these all points are very important for online education to be a boon to us, is the person's perspective, whether he sees it's a negative or a positive. From my side, I will rest my words by only saying I will in the form of motion for this online education, that online education is really, really good and is like the future of coming education. Thank you. Thank you, Rishabh. You made great points. Next, I will like to call Vinit Pratap Singh, second year civil engineering. मेरे समक्ष सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसे हम सभी जानते हैं, आज का विषय है ऑनलाइन क्लासेस। मैं विनीत प्रताप सिंह, चतुर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग उज्जैन का छात्र हूँ। आज ऑनलाइन क्लास के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिजिटल दौर में अधिकतम काम ऑनलाइन से हो रहे हैं। घरेलू सामान खरीदने से लेकर डॉक्टर से परामर्श तक ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। तकनीकी विकास के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्कूल कॉलेज बच्चों के घर तक आ गए हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में इस लेख के हम बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के काफी फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों को अगर घर में पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल दिया जाए तो बच्चे काफी ऑनलाइन क्लास सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में समय की बचत की जा सकती है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कॉलेज नहीं जाना पड़ता, जिनके कारण उनका काफी समय बचता है। घर में स्कूल इस कारण कई बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्कूल दूर होते हैं, तो इसलिए इसके लिए आने जाने और थकान के कारण बच्चे को अदर एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जैसा कि हम जानते हैं कि आरामदायक और सुविधाजनक भी हो सकते हैं। स्कूल का पहला सेशन गर्मी में शुरू होता है और बच्चों को इस दौरान गर्मियों को काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, जैसा कि सनबर्न हो सकता है, लू लगना हो सकता है, इसका खतरा रहता है। ऑनलाइन पढ़ाई से हमें घर में रहकर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और भीषण गर्मी से ही बच सकते हैं। थैंक यू एंड डिस्कस फर्दर। Thank you. Thank you, Nisar. Next, I would like to call Arpit Yogi, first semester mechanical branch. Hello, am I audible? Yes. Hello. Yes, Arpit, you are audible. Okay. सबको good evening. I am from mechanical MTech first year. So first of all, अब जैसे कि against भी बहुत लोग गए और for the motion भी बहुत लोग गए और मैं for the motion हूँ। इसके कुछ reasons बताऊंगा। सबसे पहली चीज जैसे कि सबको पता है कि ऑनलाइन जो आजकल क्लासेस हो रही हैं, हम क्लासेस ले रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस ले रहे हैं, कुछ अलग हम कोचिंग्स भी ले रहे हैं। सो ये सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात ये है, क्या ये ऑनलाइन कोविड नहीं था इसके पहले चल रहा था? नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। क्यों? और ये ऑनलाइन आया, इतना सब कुछ ऑनलाइन हो गया क्लासेस वगैरह, क्यों? कोविड के बाद ही। क्या किसी को पता भी नहीं था कि ज़्यादा कुछ क्लासेस ऑनलाइन कोई करता भी नहीं था शायद। और मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहूँगा जो अगेंस्ट द मोशन है कि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है। आप देखिए ऑनलाइन में कितने बेनिफिट्स हैं। हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑफलाइन बिल्कुल खराब है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप इसमें टाइम की सेविंग कर सकते हैं। आप मान लीजिए सपोज कोई एक्स स्टूडेंट है, वो अपने घर से आके यहाँ पे ट्रेवल करता है, मोस्टली कुछ नहीं तो 30 मिनट तो जाते जाते हैं। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर सर आप प्लीज कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं।
Okay, okay. Thank you, sir. And so would like you to Excuse start me, I also have a your doubt. point again. Hello. Yes. Excuse me. Yes, ma'am. Yeah, can we interrupt a person between of their conversation as मतलब So कि अगर सब लोग बताते जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा, it's it would like be tough to interrupt later. firstly you have to note those points. Firstly, you have means we are giving everyone the chance to speak their point, and second round we will be having that debate kind of thing. Okay, so today only we will have second Yes. round or tomorrow? Today only, ma'am. After every Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today only. Okay, okay. In second round, you can do counter questions Yeah. based on points. Once everyone is completed with their point of view, then we'll have a counter round. Yeah, sure. Continue. Okay, okay. Arpit, I would like. Hello, Arpit. Hello, yes, I can hear you. Shall I? Start it. ओके ओके सो इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो है मैं सबको गिनाना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका टाइम सेव होता है। और सपोज कोई एक स्टूडेंट है, वो आने जाने में कम से कम अराउंड 1 घंटा तो लगता ही लगता है किसी भी को। 1 घंटे में कोई दूसरा लेक्चर अटेंड कर सकता है, राइट? ठीक है। सेकेंड चीज, अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं उसमें बच्चा जाके कॉन्सेंट्रेट करता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट रहता है, टीचर्स का बहुत अच्छे से ध्यान जाता है। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट? भाई सिर्फ मस्ती करना है, क्या आप मतलब बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट को मस्ती ही करना है तो वो चाहे ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन जाए? अगर कोई चाह रहा है कि नहीं हम अब भला कर रहे हैं, लाइक कि यार स्टूडेंट्स को ऑफलाइन आना चाहिए, लेकिन जिसको पढ़ाई में मन नहीं है तो चाहे उसको ऑफलाइन बुलाओ चाहे ऑनलाइन बुलाओ, वो तो मस्ती करेगा। रही बात कि हम ऑनलाइन प्रेफर क्यों कर रहे हैं, सपोज अगर, हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये ऑनलाइन कर दीजिए, कुछ इंस्टीट्यूट बने, इंस्टीट्यूट तो है ही ऑब्वियसली, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं कि ऑफलाइन जाने में, तो वहाँ पे जाके कुछ बैठ सकते हैं। लाइक इस कोविड की सिचुएशन में भी ऐसा हुआ है कि जिसको इंटरेस्टेड है 50% गए हैं, जिनको नहीं है तो उनके लिए ऑनलाइन चालू है। देयर आर, क्योंकि ये जो डिजिटल वर्ल्ड जो है अपना, जो ये जो एरा है जो चल रहा है अपना, ये हम जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो टाइम है, इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। बहुत से प्रॉफिट्स हैं, बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, तो सबसे पहले तो टाइम सेव होता है और बच्चा, और एक चीज और है कि स्टूडेंट कॉलेज में आने के बाद बच्चा नहीं रहता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स, तो कॉलेज स्टूडेंट में इजीली अंडरस्टूड रहता है कि हाँ बच्चा आराम से बैठ के कहीं ना कहीं पढ़ लेगा, ऑनलाइन पढ़ सकता है। अगर स्कूल स्टूडेंट्स होते तो हाँ वी कैन से कि यार हाँ बच्चों को ऑफलाइन भेजना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए, क्योंकि बोर्ड्स रहते हैं नॉल सब कुछ। लेकिन कॉलेज में आने के बाद बच्चा थोड़ा सा समझदार रहता है और वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऑफलाइन बुलाइए, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बच्चा समझदार रहता है, पढ़ सकता है। सेकेंड चीज़ ये, इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग आप मोबाइल से यूज करके, यूज से लेके डॉक्टर से लेके कुछ भी है, कुछ परचेज करना है, और आजकल आपके पास हाथ में पैसे कम होते हैं, मोबाइल में पैसे ज्यादा होते हैं। सो मेरा मानना यही है कि मैं अगेंस्ट द मोशन बिल्कुल नहीं, मैं तो फॉर द मोशन ही हूँ। ऑनलाइन बहुत ही सही चीज है, उसमें बच्चा पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकता है, इसमें फोकस कर सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें सबसे बढ़िया बात यही है कि इसमें आप कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि हाँ शर्माते हैं, क्लास में कुछ पूछने में नहीं पूछ पाते हैं। इसमें नहीं शर्मा सकते क्योंकि उसको पता है कि क्लास में सिर्फ वही है, उसके अराउंड कोई नहीं है, तो वो अपने आस वो इजीली कुछ डाउट पूछ सकता है, शर्मा नहीं सकता है। तो पॉइंट्स बहुत बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स मेरे ख्याल से शायद ही कुछ है। सो मैं फॉर द मोशन, और ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए, नॉट इवन सिर्फ लाइक कोविड में ही सिचुएशन में नहीं, हम रेगुलर बेसिस भी कर सकते हैं, लाइक अभी भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।
Thank you, Arpit. Next, I would like to call Sorry for the inconvenience caused. मैं वापस स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट I hope प्रज्ञा, everyone has फर्स्ट सेम joined. केमिकल. I repeat, प्रज्ञा, फर्स्ट सेम केमिकल ब्रांच. नहीं है. ओके. यश यादव. यश यादव. Yeah, hello. 8th sem. Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, so good evening, everyone. My name is Yash Yadav from 8th semester, branch Electronics and Communication, and I am going against the motion. Yeah, I am, as our previous speaker told about that coin has two sides. Yeah, I'm agree with that. And online classes, advantage of online class is also has two faces. There is some beneficial side and there is some disadvantages. But I am going with against the online classes because in present time in India, it is not, the motion is shifted towards the benefit of offline classes, because as someone said that there is no online classes before pandemic. There are several platforms like Byju's and GradeUp which uses their online classes. We also use YouTube, which is a form of online class. So before the pandemic, there was online classes, but in COVID-19 pandemic, it is the demand of hour that we use online classes because there was strict lockdown during that time. But we can also see that there are several like Byju's, which mottos has that they feels like offline. They feels like classroom. Means their motto is to create an environment like classroom. So it is the formula of online classes started as the subset for offline classes. Means they want to create an environment like offline classes. So offline class is the foundation. As we are from Indian cultures, there are several gurukuls in the later in the previous ages, which teaches their students in the presence of nature, because teaching is not only about the mugging up of things, not only of theories, not only of formulas. Teaching is all about the overall development of an individual. And there are as in school students, it is important to take part in social gatherings. Means like there are several activities in sport. There are several activities in schools like sports activity, annual fest, different debate competition, which was missed by the school students. And in India, there are only 60% of smartphones users are there, and you can see the if we use online classes as a mode of education, we faces many problems. Like we can also see that there should be a phone, there should be an internet connection, stable internet connections, and not everyone can afford the things which are required for better education purposes. As agriculture is a primary source in our India, primary employment in our India, many farmers. I am from a small city. I saw many farmers and many small small earning persons that they were struggling for buying phones for their uh, children to get the online education. And if a home has two phones and there are 5 to 6 children and they have same online timetables, means the classes are conducted in same time period, so there were also mismanaged of arranging the phone for every child. So yes, and talking about the health issues, there are blue lights coming from the laptops and mobile phones which can also affect your eyes. Usually attending online classes increases your screen time, so it is also not beneficial for our eyes.
And as we are youth, we also are connected with several social networking sites like Instagram, WhatsApp. There are several groups where messages are continuous. So there's problem to focus on a specific thing. There are several distractions in our phone when we are attending online classes. And as you know, in online classes, we are not so much getting the practical things. We are only mugging up things, and you can see the result of there are several things that we saw during the online classes. Teachers also have to work upon their work upon with their technological issues, because they are not so much friendly with the phones and technologies. And you can easily see the results of that. The result in the online class, result in online exams, and result in offline classes, offline exams. So yeah, that's it from my side. Thank you, sir. Next, I would like to invite Yuvraj Singh Panwar from first semester, branch Electronics and Communication. Education is a passport to future, and future belongs to those who prepare it for today. Good evening, everyone. My name is Yuvraj Singh Panwar, first semester Electronics and Communication Engineering. हर साल हमारे देश से लगभग 18 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। उन छात्र छात्राओं को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अब मौका है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो विदेश की यूनिवर्सिटीज व एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से घर बैठे पढ़ सकते हैं। और मेरा दूसरा पॉइंट है कि समय की बहुत सारी बचत होती है ऑनलाइन क्लासेस में। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता था तो करीब 1 घंटा मेरा ट्रांसपोर्टेशन में बीतता था। अब वो 1 घंटा में अपनी कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज को सीखने में लगा सकता हूँ, जिससे मेरा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दूसरा है कि मेरे नहीं सिर्फ सारे बच्चों के पैसों की भी बचत होती है। उससे हम वो गैजेट्स खरीद सकते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जरूरी है। जैसा सर ने पॉइंट रखा था कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए गैजेट्स की कमी होती है या फिर कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है बच्चों के पास, तो जब ऑनलाइन क्लासेस में फीस कम लगेगी तो पैसा भी बचेगा और उनसे गैजेट्स खरीदे जा सकते हैं और वो सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, जैसे बेसिक फ़ोन, इंटरनेट की फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी। दूसरा मेरा एक और पॉइंट है पर्यावरण को लेकर। हम लगभग 4.6 टन कार्बन इमिशन देखते हैं एक छात्र के प्रति हर यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी में, और ये प्रतिवर्ष का डाटा है और इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर हम बात करें तो 3 करोड़ पेड़ हर साल काटे जाते हैं किताबों को छापने के लिए। अब ऑनलाइन क्लासेस में PDF फॉर्मेट में किताबें पढ़ाई जा रही है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि जो 3 करोड़ पेड़ है उनकी भी जो कट रहे थे हर साल, उनकी भी संख्या कम हुई है और पर्यावरण को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरा अगला पॉइंट है कि अब ऑनलाइन जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो जो बच्चा आगे आके बैठता था वो अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाता था, पर अब ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं भी बैठे हो, कहाँ भी बैठे हो, अगर आप चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो और चीज़ें आसानी से सीख सकते हो। और मेरा आखिरी पॉइंट है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस ना होती तो शायद हम कोविड के बाद 25 करोड़ ऐसे छात्र छात्राएं होते जो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते, और ऐसे बहुत सारे छात्र होते उनमें से जो एजुकेशन को कम्प्लीटली छोड़ चुके होते। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you, Yuvraj. Next, I would like to call Harshita Gurudatta, 4th sem ECE branch. सॉरी टू इंटरप्ट। एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर कुछ बीच में हमें कुछ बताना हो, लाइक हमें कुछ जो भी आके जो हमें स्पीच दे रहा है, तो उसमें अगर हमें कुछ अपना सजेस्ट करना है तो उसमें कुछ है लाइक सर we have second round for that, जिसमें आप आपके काउंटर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आपकी ओपिनियंस भी दे सकते हैं इन सेकंड राउंड। तो सर आपको इस राउंड में नोट्स करना है, दूसरे की बात आपको सुननी है जो उसकी। ओके। Harshita Gurudatta. Well, this is my specs, and the only thought which hits my mind after seeing my specs is me in front of a black screen, my stiff body, and my constant irritation caused due to prolonged use of headphones over my ears.
Greetings to all. I'm Harshita Gurudatta, and I'm gonna speak against the motion online classes. We are in the era of growth. We are making everything around us interesting and creative, including the technology, which has further introduced us to the concept of online classes. But the creativeness of the technology in this term, that is, the online classes, does not even stand in competition to the physical classes where teacher, by seeing even on the expressions of the student, knows what's on his mind, whether he is getting the lecture, or even if he's mentally present there. Online classes are more of a lecture oriented rather than discussion oriented. Many studies confirm that students showed a better performance when they were physically present in the classroom, where we do, and rather than in online mode where we don't even get to know if he's actually attending the classes due to low level of participation showed by the students. The feeling that I'm right, but they don't know I'm right, is a disturbing one, isn't it? We speak, but our voice becomes inaudible. We are on our video, but the network makes us invisible. We try to unmute, but the system keeps everything muted. Isn't it a irritating one? Online classes have surely given us uninvited problems and suddenly created a havoc in every one of our lives. Online classes were introduced as a measure to deal with tough situation. It was an alternative of physical classes. It can never replace it. It can never be the fundamental mode of learning. Education is means to be passed through human connection. The foundation of education is a human connection, is writing, is learning to write, which can never be done without someone holding your hand and making you do it. Online classes are good for a brief period, but for a long run, it's surely a ban. Thank you. Thank you, Harshita. Next, I would like to invite Shrishti Sahu, first semester electrical branch. A very peaceful good evening to everyone present here, worthy opponents, as well as the people favoring this topic. I am Srishti Sahu, first year, first semester from electrical branch, and I'm speaking against online classes. The very first thing that I would like to say is that a lot of gadgets are required when it comes to learn from an online platform. You cannot learn without having the access to those gadgets. Also, network connectivity is the major issue that arises, as one of the delegate over here said that most of the times the cameras and audios are having mute and unmute problems. So that is definitely true, because we cannot learn the things on the screens. The screen timing is the another major issue that comes, because it's not just like that. That you're sitting that you're using the phone or your screens just for the online platforms and just for the online classes. Instead, you are using them also for the social medias. So on an average, you are going to spend 10 to 12 hours among in all the 24 hours in the 24 hours. So it is definitely not good for your eyes as well as for your health. There is no physical work done when you are attending the classes or lectures online. Sharing my experience, I have lost a lot of things and a lot of skills of mine that I used to be good at, because most of the time I could not get the things that were taught in the classes that were conducted online. Also, I could not interact with my tutors. The other thing is that I feel sense of isolation when the classes were held. Additional trainings are also required, not only for the students to just be concentrated, but also for those people who are operating those things. The instructors who are teaching the things, they must know how to operate and how to resolve the issues that are occurring technically. So the in-depth knowledge, and they should have in-depth knowledge about those things as well. As a student, the student keeps on procrastinating the things further, that I'll do this later. So the online classes the results of the online classes does not comes to be that efficient. That's all I would like to say. Thank you.
Thank you, Srishti. Thank- Next, I would like to invite Yashita Soni, first semester computer science branch. So, very good evening to each and everyone present here. I'm very delighted to be a part of this session today. So, I am for today, I am with the cause that online classes should prevail. Okay, so new normal. We all have heard, and we are living in a world with new normal. आज grocery store से लेके office और classes, everything is online today. Okay, and if we ask or if someone asks us कि आज आपका सबसे बड़ा achievement क्या है, then we will definitely say that I would definitely say that I am alive today. For me, my safety is my first priority. If I am attending online classes, I think बहुत सारे अब यहाँ पे पॉइंट्स आए हैं कि एफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन आई वुड से कि सेल्फ एनालिसिस भी एक चीज होती है. आई थिंक अगर हम एक टॉपर की बात करें जो स्कूल में भी टॉप करता था या फिर ऑफलाइन में टॉप करता था, तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन में भी करेगा, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि आप कितने एफिशिएंट है और आप कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. दूसरी चीज ये है कि this mode, online mode, is actually very flexible and accessible. If you are sitting anywhere in the world, आप अपनी classes miss नहीं करेंगे. There would not be any attendance की problem. And we say that time is money. आपका transportation के साथ यहाँ पे मनी तो बच ही रहा है, बट वो जो टाइम होता था, वो हेक्टिक जो एक शेड्यूल हो जाता था. आज आप सुबह उठ रहे हैं, यू आर ऑन योर बेड एंड यू आर इन योर क्लासरूम. दूसरी चीज ये है कि इफ आई एम सिक और वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, अगर मैं मेरी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही, ऑनलाइन में ये फायदा है दैट आई वुड डेफिनेटली गेट दैट रिकॉर्डिंग विद मी, सो आई एम नॉट मिसिंग एनी ऑफ द क्लासेस. बजट फ्रेंडली है. आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, वहां पे आपका लेबर कॉस्ट बच जाएगा फॉर द क्लीनिंग एंड ऑल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर्पस बच जाएगी. व्हाट यू नीड इज ओनली अ डिवाइस. एंड ऑनेस्टली गाइज, वी ऑल नो कि आज कोई कितना भी हो, एटलीस्ट ही और शी विल अफोर्ड अ फोन. अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो और भी चीजों के लिए वो करेगा. दूसरी चीज, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है. और दूसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे. इट्स नॉट कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, बट डेफिनेटली अगर आपको करना है तो आप ऑनलाइन में भी उतने ही फोकस के साथ करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप बाहर जा रहे हैं देन यू नीड टू पुट मास्क एंड सैनिटाइजर, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है. घर पे हैं आप, सेफ हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम रियली विद द कॉज कि ऑनलाइन एग्जाम्स आर रियली, ऑनलाइन classes are really better than offline classes. That's it. Thank you. Thank you, Yashita. Next, I would like to call Nisar. Nisar from 4th Sem CSE branch. Nisar. Okay, is not there. Sakshi Patil. Arvind. Arvind, are you present? Arvind. Yes, sir. Arvind Malviya. Okay. Good evening to one and all. I am Arvind Malviya, and today is the topic of online classes. So I am going to tell about in against the motion. So it's been 2 years that we all are taking the online classes, and at least I get a chance to go in college and take the offline classes, and then again COVID came in my life, and I again have to face the offline online classes. So what did just happen to me after taking these online classes? I take the classes in an isolated environment where I have no distraction. This is a good point. But the thing which happens to me is that I'm not able to communicate with people, because in offline classes we have classmates and we go there and interact with them and we learn how to speak with people. But in online classes, what did happen to me? I don't get in contact with many people. I have limited friends
with whom I talk on phone, on chats and something like that. So that's how I forgot, or I don't know why, but I become introvert, and many people thinks that so if they take online classes more and more, so they have very less contact with people, and that they forget or they do not able to develop themselves in a communication in their communication skills. And we have many drawbacks of online classes that we all know have that we we may face technical issues, network issues, and there are many problems. But the thing which doesn't seems good in online classes is that I want to tell an example. So we think that we are so technical that we are able to learn from the online classes. But what does happens in IITs and NITs? There are people go in college, stay with people, with other peoples, and they communicate with each other, and that's how their thoughts interchanges, and they can go in a better they can go among the smart people where they develop themselves. But in online classes we are unable to do such type of things. That's why we see that the smart people came from IITs and NITs, because they have access to smart peoples. They can go, they live among them, and they exchange their thoughts and develop each other. But in online classes we have no one. We have only ourselves, who just stuck in this room, and and his mind is stuck in between his own questions and his own thoughts. But if we have people, so we can go and ask them, so we may find a solution of a particular problem and find good suggestions. So that's all I want to say. Thank you. Next, I would like to call Pankaj Dabi. Pankaj Dabi. We don't have him in the meeting. Next is Shrikant. Okay, so I guess we are done with all.